Yeah, okay. So, about the contents, what we are going to study today, it's about the hose assembly. What is a hose assembly? Then how the evolution of the hose assembly started, and the flow charts in the used in the hose assembly process. And next is the features of the hose assembly process and the common errors, and what is the good crimp and the bad crimp. And the next is the new technology and the advancement of the hose assembly process. Future best method is something like this. Future scope of the hose assembly process. And the last one will be the question and answer session. So let's start with the beginning. So what is a hose assembly? Okay, hose assembly is the length of a hose with a properly attached fitting on the end, both end. It's called a hose assembly. So hydraulic hoses have three major parts. Like only the hoses I am telling about the hose only, which is including with a tube, inner tube. We call it as the innermost portion of the hose. So it will be a medium of the like fluid which is being conveyed from one end to the other end. So it will be an inner tube. The second one is the reinforcement that comes on the top of the tube, and it will be like braided or spiral or helical. This will be the hoses. And the third portion will be the cover. The cover is designed to protect the reinforcement from the outside environment. So, so all these parts play a major important role in the hose assembly. These hoses are designed to meet the different specifications and the requirements for the different environments where the hoses will be installed. And mainly the hoses have the major role in the hose assembly unit, where if it gets collapsed, then it's a major problem. So let's study about this process more and more. How we started, how the evolution of the hose assembly gets started. So in 1920s, there was a growing market for the hydraulic brake hoses. So manufacturers like Eastman and Weatherhead, they came into the market in 1920s. Then 1930s, hydraulic operated machinery gets started with the aircraft. Like there was a new market for aircraft. At that time, the hydraulic brake hoses were in the picture, and the Parker also came into the picture. It was a growing company in 1930s. So similarly, the fittings and everything was being done, but there was a form of not a crimping, but it was a swaging. The hydraulic hoses were being swaged at that time in 1930s. Next comes 1940s. The Eastman company began its like manufacturing, and they started with one-piece brass hose coupling came into the picture for SAE hoses. Then in 1950s, the distributors at that time started the reusable hose couplings at that time. That means I mean the hoses were there all the time. The reusable hoses were being came into the picture. Next, the 1960s. The company called Weatherhead, it developed a crimper model T40, and that time it was very popular. And then only it started like a crimper eventually came into the market. And at that time, the major market was for agriculture, not any other things. Then in 1970s, the hose assembly demand arose more and more. Then it came into the picture called like the swaging was at that time a major market for swaging machines. But then afterwards in 1970s, Finnpower, Uniflex, all these crimping machine manufacturers came into the market. They started producing the crimping machines into the market. So then after we started like the crimping machine came into the picture, then the assembly process was like in a complete chart it came. Then it started like we can study something like this,
like hose assembly process is being started with hose cutting first of all. Hello, ये वाले बिट तो कॉमन होने चाहिए तब अराउंड ये सेंट्रिक हो गया मेरी बात ना, जब ड्रिल शिफ्ट हो गया। हाँ और ड्रिल शिफ्ट हो गया ये वाला। so hose assembly process starts with hose cutting, then comes hose skiving, then the ferrule inserting or nipple inserting, or we can tell it as क्या बोलते हैं उसको, फिटिंग वाला भी इंसर्ट करने के लिए होस पाइप के। so that is the third port, and the fourth one comes the hose crimping machine. Next is the hose testing machine, and the last one will be the hose cleaning machine. So this is a process where the hose assembly starts and ends with hose cleaning, and the last comes the wrapping of the hoses and send it to the customer. But in this process, if there is a backlash or something मतलब कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा, so then the whole assembly is a waste. The whole process has to be taken care one by one. Let's study with like hose cutting में कुछ problem आ गया, if it is not exact something, let's study what's the process and how it has to be done in a proper manner. Okay, so first comes is the cutting process. I think you are seeing the picture of the blades here. Okay, what are the issues comes when we start the cutting process? If there is not an exact 90-degree cut, the angle should be exactly 90 degree. If there is a way, मतलब थोड़ा सा भी आगे पीछे हो सकता है, that it will be like only 3 degree का difference रख सकते हैं हम लोग, not more than 3 degree. It should be exactly 90 degree cut. Then only the hose is a proper cut. Next is the problem with the dust, smoke, debris, and the steel wires, scattering of the steel wires. It's a big problem where the safety measures are also has to be taken care. So we have to use, for this one solution would be like, we have to exactly use the proper blade or appropriate blade to minimize the heat, and the damage of the rubber should not be done. Rubber also has to be cut exact 90 degree. Not only the wire braided or the spiral braided or some other things, it has to be cut exact 90 degree. Then only the hose will be in a proper cut. Next goes for the blade vibration. See, if there is an like a, what do you call it as alignment अगर बराबर नहीं रहा, there is a problem with the blade. If the vibration is there more and more in the cutting blade, then it's a big problem in the cutting also. If it will not be an exact 90-degree cut, the alignment should be there exactly to the cutting motor, and it has to reduce the like क्या बोलते हैं आप, ओबलिंग जो रहता है ना, उसको थोड़ा सा reduce करना चाहिए. If not, the cutting will not be in a proper manner. Next comes the cutting blades. We have to choose the appropriate blades for the appropriate cutting. See, there are a lot of blades in the market. Like plain blades is there, slotted, micro slotted. My diamond blade is also there. We have to choose appropriate blade for the appropriate hoses. If not, there will be a problem. And accordingly, the shape, the sharpness of the blade should also be done in a periodical time. अगर आप ब्लेड को अगर शार्पन नहीं कर पाएंगे, लाइक आप समझ लीजिए डायमंड ब्लेड पे तो शार्पन नहीं कर पाएंगे, प्लेन ब्लेड होगा या स्लॉटेड ब्लेड होगा या माइक्रो स्लॉटेड ब्लेड होगा, उन सबको आपको शार्पन करना पड़ेगा, बट इन ए प्रोफेशनल मैनर, नॉट विद द हैंड ग्राइंडिंग मशीन. अगर वैसा वैसा अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, देन द ग्राइंडिंग विल बी लाइक आपका ब्लेड भी खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा. बट दैट शार्पनिंग ऑफ द ब्लेड has to be done with the professional, and 0.3 mm grinding only has to be done on the cutting blade. This is a vital information which we don't give to everyone, but in this platform I have to give, because all the people are not doing in a professional manner the sharpening of the blade. And secondly, last, इसमें जो है आप जो है कभी भी abrasive blades use ना करें.
क्योंकि अब्रेसिव ब्लेड्स यूज करने से प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है. फर्स्ट प्रॉब्लम, the dust problem will be there. Secondly, the air pollution will be there, and the contamination of the hoses. It is a serious issue. The contamination of the hoses. Using an abrasive blade, it does a lot of damage to the hoses and the hose assembly that cannot be reduced in any manner. See what happens. I will tell you. Abrasive blades, they take out a waste of nearly 6 mm waste in the whole hose pipe. If you measure this one and afterwards, uh, और आप अगर स्टील ब्लेड पे आप कटिंग करेंगे, देन इट विल बी ओनली ऑफ 2 mm वेस्ट. देयर इज एन, मतलब आप बचत करेंगे 4 mm का. आप अगर होल एक दिन का अगर हिसाब लगा लेंगे, देन इट विल बी नियर टू 1.5 मीटर ऑफ द होस. इट विल बी, आपको बचत होगा, प्रॉफिटेबिलिटी में होगा. इफ इट गोस ऑन टू एन ईयर्स, आप अगर इसी ब्लेड यूज कर रहे हो, जहां पे आपको बचत होगी करीब करीब 1 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है अगर आप अब्रेसिव ब्लेड्स ना यूज करें. तो स्टील ब्लेड यूज करें, 2 mm का वेस्टेज होगा बस, ज्यादा से ज्यादा 2 mm, और उससे भी कम हो सकता है. ओके, नेक्स्ट. ओके, व्हाट आर द कॉमन लाइक ब्लेड्स जो जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी. लाइक फर्स्ट comes is a micro slotted smooth edge blades. So these micro slotted smooth edge blades, which are used for cutting braided spiral industrial hose, PTFE hoses, and also the flexible metallical hoses. Okay, this will be the shape of that one. Please use proper and an branded blade, because it will be like much more like बहुत हार्ड रहेगा और अच्छा रहेगा. और अगर लोकल से आपने खरीद लिया ब्लेड वगैरह, तो ब्लेड्स का जो माइक्रो स्लॉट रहता है वो टूटने का डर बहुत रहता है. बाद में क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी ब्लोन ऑफ. आपका ब्लेड जहां पे आप 2 साल तक चलाएंगे, 3 साल चलाएंगे, उसको आप ज्यादा से ज्यादा 6 से 4 महीने तक ही चला पाएंगे. सो प्लीज यूज ए ब्रांडेड cutting blade. So next comes the commonly used blades for the suction hoses with helical wire. They are called as scalloped blades. So जहां पे R4 और उसके इक्वलेंट की जगह आपको कटिंग करनी है, तो आप स्कैलप ब्लेड्स ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसको कट करने से आपका जो स्पाइरल और जो ये हेलिकल वायर्स है, उन सब की जगह पे ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है. So next is the thermoplastics and PTFE hoses. So smooth blade बहुत ज्यादा यहाँ पे काम होता है. Smooth beveled edge blades, they come into the picture because what happens is these PTFE hoses and everything, it's all the wires सब कुछ बाहर बाहर ही रहता है. जब आप कटिंग करोगे तो ये स्मूथ ब्लेड यानी कि डबल ब्लेड भी इस्तेमाल करेंगे. एक एक में मशीन्स भी हैं जहाँ पे डबल ब्लेड भी इस्तेमाल होते हैं. मच मोर यहाँ पे हमारी जो इंडस्ट्रीज है, मार्केट है, उसमें सब लोग जो है ना, एक रैप किया होस को ऊपर, उसके बाद डायरेक्टली दो गो ऑन कटिंग विद द स्मूथ एज बिवेल्ड एज ब्लेड पे ही कटिंग करता है. जहाँ पे टेक्सटाइल रीइंफोर्समेंट होता है, वहां पे ज्यादातर इसी को इस्तेमाल करना बहुत सही बात है. प्लीज यूज लाइक अभी जो जो होजेस हैं उनके हिसाब से उसी होस को इस्तेमाल, मतलब ब्लेड्स को यूज करना सही मायने में अच्छा लगता है. अगर आप सभी होल्स के लिए सभी तरीके का ब्लेड इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. अब ये देख लीजिए, कॉमनली यूज ब्लेड्स फॉर थर्मोप्लास्टिक एंड पीटीएफई होसेस, वी कॉल देम स्मूथ beveled edge blades. These smooth beveled edges, yeah. So now the safety instructions to be taken when the cutting is been done. So do not operate the cutting machine with a dull blade. No need. Okay, sir. Now the hose should never be forced into the blade or cut without the proper bend radius. Forcing of the hose into the blade will cause excessive friction, heat, and reduce the life of the blade. May cause blade to break also. So problem is there. आप कभी भी होस को क्या करते हैं, उसकी
उसके बिना पे कि हम कर नहीं दीजिए, उसको दबाना, दबा के चलो धक्का मारेंगे, जल्दी प्रोडक्शन चाहिए, तो आपका ब्लेड कटिंग तो करेगा ही, मगर आपका ब्लेड का जो लाइफ है वो कम हो जाएगी और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा, मशीन रुकने के चांसेस बहुत रहेंगे, आपका जो मशीन के अंदर ब्रेक है वो काम करना बंद कर देगा। So don't use a dull blade or don't force the material to go inside to the blade very faster. Please do something like in a professional manner to make it a professional way, and the blade will also go on for a longer life. So inspect the blades periodically, please. तो क्या हो जाता है, एडजस्ट अगर आपने सही तरीके से ग्राइंडिंग किया है और आपका शार्पन नहीं है तो कटिंग नहीं कर पाएंगे आप, कल का दिन आपको ही प्रॉब्लम चालू हो जाएगा फिर। Please make it sure that you inspect it very well, like हर टाइम, यानी कि आप समझ लो कि 1 week का टाइम है और every month you have to check these plates in a proper manner, and the edges should also be very sharper. very sharpen की जरूरत नहीं है, आप अगर हिसाब लगा के उसको ग्राइंडिंग करवाते रहेंगे in a professional manner, then these plates will go on for a very longer life. Okay, whenever possible, आप अगर चाहते हैं तो लुब्रिकेशन भी करना पड़ेगा। जब कटिंग करना हो तो क्या करते हैं आप, जैसे स्पाइरल वगैरह कटिंग करते हैं तब उस टाइम पे चाहेंगे तो लुब्रिकेशन भी इस्तेमाल करो तो बहुत बेहतर रहेगा। इट विल गिव यू योर ब्लेड वेरी लॉन्ग लाइफ। टेक केयर ऑफ इट। So next comes, all the time please wear the safety glasses at that time when you are cutting a hose. Any type of hose, please wear the safety glasses. Safety measures should be taken every time. So next one, द मेन प्रोसेस, स्काइविंग। पहले तो आपने कटिंग देख लिया, कटिंग का प्रॉपर मतलब प्रॉपर तरीका भी देख लिया और ब्लेड्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है आपने देखा। नाउ द स्काइविंग इज आल्सो बिग प्रोसेस इफ इट्स आल्सो नॉट इन ए प्रॉपर मैनर। अगर स्काइविंग तरीके से सही तरीके से नहीं किया और इंसर्शन आपने सही तरीके से नहीं किया, होस के अंदर फिटिंग तरीके से नहीं बैठा, देन इट्स आल्सो बिग प्रॉब्लम। सही, द बेसिक, आपने पहले स्काई लेंथ को अपने सही तरीके से जांच लिया, मार्किंग कर लिया, मार्किंग करने के बाद आपने स्काइव किया। स्काइव करने में क्या होता है, अगर आपने प्रिसाइज इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से आपने स्काइव किया तो आपका जो फिटिंग है सही तरीके से अंदर बैठेगा और दबा के चपक के बैठेगा अंदर। मोस्टली व्हाट हैपेंस इज perfect and precise skiving of the external and internal covers with the quality tools make the surface wire and rubber free. Then what happens, assembly will be in a proper manner. If not, to achieve the quality, the safe crimp will not be done. Proper manner of skiving should be done in a proper way. And safety measures, if you don't use, somebody what happens is they go for hand skiving also. अरे कुछ नहीं होता, चलो चलाते हैं, हैंड स्काइविंग से कर देते हैं, हाथ से कर देते हैं। Lot of people do that kind of a thing, and what is this? This is a dangerous thing. Just अब क्या होता है, उससे इंजुरीज हो जाते हैं एंड अनइवन स्काइविंग हो जाता है, वायर्स बाहर निकल आते हैं, फैल जाते हैं। दैट काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम, इट टेक्स लाइक अ improper crimping हो जाती है। Then after the improper crimping, what happens is the whole assembly will be perished. Please take care of it. You have to please insert the ferrule exact to the marking of the scribed portion. Please ensure the hose is pushed until it hits the internal stop of the ferrule. You have to take care of it. Insertion is also a big process. If insertion is been half done, then the whole crimping process has been shattered. Take care of it. Push the insert fully into the hose until the contact of the hose ferrule. Large bore and the interlock fittings may require the use of the pushing machine to ensure the proper insertion of the hoses. कहीं बहुत जगह पे हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो, सब लोग जो है हथौड़ा लेके मारते हैं, फिटिंग के ऊपर हो हथौड़ा लेके मार लिया, या फिर कुछ और तरीके से उसको अंदर दबा के ऑयल डाल के सामने से ये सब इंसर्शन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। That kind of a improper way of doing, it's not a professional way, but it's an improper way where you will get like injuries mostly. It's not a safety way. So take care of it.
all the time you use a machine. There is a pushing machine where you do it with a, what we call it as pneumatical way. The pushing is be done in a pneumatic way where all the safety precautions taken care. But apart from the safety precautions, the product will also be in a proper manner. Hose assembly बहुत अच्छे तरीके से ready होके खड़ा हो जाएगा आपको. If correctly not mounted at the end of the ferrule, it will be like improper skiving. मतलब skiving के नहीं, मतलब अंदर नई तरीके से अंदर सही नहीं गया तो इंसर्ट नहीं हुआ तो क्या होता है कि आपका जो क्रिम्पिंग होगा टेपरिंग शुरू हो जाएगा. So inserting machines are designed to make the fitting assembly quick and easy. So आपका प्रोडक्शन भी लंबा हो जाएगा और सही तरीके से आपका होज असेंबली भी रेडी हो जाएगा. Machines offer optimal ergonomic and easy fitting for all the size hoses. They provide high performance in production as well as the quality workshop. Due to the rapid tool sled, the hose insertion of 90 degree is a must. आप अगर 90 डिग्री इंसर्ट नहीं कर रहे हैं so it will result to the huge damages. The hose assembly totally will be like it's a wreckage. Actually adjustable insertion prevents king matlab of thin iron hoses for efficient operations. So take care of it. Skiving and insertion process is a big and a must. Proper way it has to be done. So next question, it comes to the hose crimping machine. अभी एक दो तीन पोर्शन आपने देख लिया, जैसे कि फर्स्ट वन इज द कटिंग मशीन, सेकंड is the hose skiving. Most probably nowadays no skiving is being done, but in some portions the skiving is also being done. And the third one is the most important process, that is called as insertion. आपने अगर insert नहीं किया सही तरीके से, that's also a big problem. And the fourth portion, and it is the heart of all the hose assembly unit, that's the hose crimping machine. Let's start. So hydraulic hose is a kind of equipment for crimping and stretching. It is mainly used for fabricate the hydraulic hose assembly. So it's also called as hydraulic hose crimping machine or hydraulic and the hose crimping machine. So in general, the working principle is much more easier. The crimping machine is used to convert the electrical power or fluid power into a crimping force. Some crimpers are designed with the pneumatic operated or air operated or hand operated. The force enough to change the shape of the steel tube, like we call it as steel tube, or the ferrule, can change into a form into a solid bond between the metal and the workpiece. So this is the process of crimping, and there are various crimping machines in the market to offer the multiple services, but we have to choose the appropriate machine for appropriate job. Most of them are used for repairing the hydraulic hoses, industrial hoses, some workshops, and like use a crimper to switch the metal pipe. Small metal pipes will be there that also been crimped. Not only small pipes, the big pipes are also been crimped by the crimping machines. A lot of operations can be done with this crimping machine, but some crimping machines can also support to the press, the air suspension, and the wire ropes also can be done in the crimping machines. In daily life, we see a lot of crimpers in the hydraulic hose assembly workshops where the hydraulic or a repair mobile van, service van is also being done, or in a construction site. We can see all these crimpers there. I know mostly OEMs are also there. The service location and the crimping workpiece lead to a crimper. Also have categories such as manual hose crimping machine, portable hose crimping machine, production crimping machines. So we can see some of the type of the crimping machines here. So we can see some of the glimpses of the crimping machines which are in the market as of now. But the process of crimping machine is the simple. See the collet here, they move up and the die closes. To crimp a hose, did you get that point here? The collets, what we do is the collet pushes the dies and the die crimps here
for the ferrule and to touch the hose. Then the crimping bondage will be done in an easy manner. So these are all like, this is an anatomy of the crimping machine, crimped hose, and these are all the crimping machines which are in the market as of now. A lot of different crimpers are there. Parker, Uniplexis is there, and Finnpower is there, OP machine is there, Manoli. A lot of crimpers are there in the market. We see a lot of crimping machines which is in the market and used by all the hose assemblers as of now in India. So next, what is the quality crimping? Let's study this one. Okay. How can we do a quality crimping here? First of all, selection of a proper die should be done. So what happens is, if there is not a proper quality, like a selection of the proper die is not been done, what happens? Something improper way of crimping is been done, and afterwards a lot of problems arise here. And this is a long process. Please bear with me here. What happens is here, if the quality selection, like crimping selection or a proper die is not done, then it will be a big problem. We have to choose the nearest closing diameter die sets. See what happens. आप अगर सोच लो कि आपने करीबन 10 mm का क्रिपिंग करना है, आपको डाइसेट लगानी पड़ेगी कितने की, नियर टू 10 mm की लगाओगे या फिर 9 mm की क्रिपिंग का डाइसेट लगाओगे, देन इट इज नियर. कहीं दूसरी तरफ से आप समझ लो कि 4 mm का डाई लगा दिया या 5 mm का डाई लगा दिया और आपका बहुत दूर है, 10 mm का क्रिम्प करना है, तो आप सोच लो कहीं बहुत दूर हो जाएगा, आपका मार्किंग भी बहुत बड़ी मतलब बुरा तरीके से आएगा. इट विल बी नॉट इन ए प्रॉपर वे ऑफ क्रिम्पिंग. सो प्लीज यूज ए प्रॉपर डाई, मीन्स exact die, nearest die. So next, reducing of the ovality in the crimping. So most probably सबको भी ovality का एक प्रॉब्लम है, हर एक क्रिम्पिंग मशीन में भी ovality का आता ही है. So what can be done to reduce the ovality? So we have to use the quality dies and the quality machine here. So we make sure that अगर आपने सही तरीके से आपने डाई यूज इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपका मशीन प्रॉपर नहीं है, आपने लोकल कोई मशीन ले लिया और उसमें बोलते हैं कि ओवाल्टी आएगा, तो आएगा जरूर, बिकॉज इट विल बी नॉट इन ए प्रॉपर वे. सो यू यूज एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ ए डाई सेट. कोई डाई सेट कोई और तरीके से आपने इस्तेमाल कर लिया तो सही नहीं लगेगा ना. So please use proper machine for with a proper die to reduce this ovality. It has to be done. And mostly the standard is there that it can be allowed 0.2 mm of ovality, it can be allowed. It's international standard में है. And बहुत लोग ये देखते भी नहीं है, ओवालिटी का चेक ही नहीं करते कोई लोग. मतलब क्या, आप अगर रिटेल वर्कशॉप पे चले जाओ तो आप कोई क्रिम्पर पकड़ के कोई भी क्रिम्पिंग के लिए चेक नहीं करता है, ओवल्टी है या नहीं वो भी नहीं चेक करता. क्रिम्पिंग किया भाई, ले ले चला जा, कल के दिन प्रॉब्लम आएगा, ये प्रॉब्लम है मेरी मशीन. प्लीज टेक केयर ऑफ इट, दैट ओवलिटी इज अ बिगर प्रॉब्लम. एंड व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ द मशीन, यू हैव टू चेक बिफोर क्रिम्पिंग ए होस. अगर आपने ये होस को चेक ही नहीं, मतलब होस किस मशीन में, कौन सी मशीन किस तरीके से करती है, कितना टनेज है, वो आप देखोगे नहीं तो प्रॉब्लम जरूर आएगी. प्लीज चेक द कैपेबिलिटी ऑफ द मशीन, वेयर यू हैव टू एडजस्ट ऑल द सेटिंग्स एज पर द नेसेसिटी. अगर आपका फोर्स एक्सीड हो जाता है, आप समझ लो आपको सिर्फ कितना बार तक का क्रिम करना है, 15 या 20 बार तक का आपको क्रिम करना है, और आपकी क्रिम्पिंग मशीन कुछ और इवन 200 बार तक का आपको प्रेशर दे रही है, तो आपका वो सेटिंग ही नहीं होता है. जहां पे आप लो प्रेशर क्रिम्पिंग करना चाहते हैं और हाई प्रेशर का क्रिम्पिंग आपने मतलब क्रिम्पर आपने इस्तेमाल कर लिया, देन इट विल बी नॉट ए मैच. प्लीज मेक श्योर दैट एग्जैक्ट कैपेबिलिटी ऑफ द मशीन शुड बी डन फॉर एग्जैक्ट, लाइक द होस क्वालिटी. मतलब होज आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको एग्जैक्ट मशीन भी आपको प्रॉपरली चूज करना पड़ेगा. लो प्रेशर क्रिम्पिंग पे आपने हाई प्रेशर क्रिम्पिंग का भी
मशीन लगा के आपने कर दिया तो क्या होता है, आपका पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, होस्ट असेंबली खराब हो जा सकती है। So please make sure, and mostly what happens is the bigger brands they give with अब मैं क्या बोलूं, अच्छा कंट्रोलर वगैरह सब बना के देते हैं जहाँ पे आपको सेटिंग्स करना पड़ता है। लो प्रेशर क्रिम्पिंग के लिए आपको वो सेटिंग करवा के देते हैं, करते भी हैं। प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट नहीं हो पाएंगे वहां पे। जहाँ पे आपने लोकल मशीन लिया तो आपको आपको वो कैपेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे उसको लो प्रेशर क्रिम्पिंग करने की कैपेबिलिटी उसको नहीं आती है। जहाँ पे हाई प्रेशर का वो बोलते हैं 450 टन का मशीन है, चल रहा है 450 टन का, मगर आपको जो चाहिए वो सिर्फ आपको 100 के अंदर ही चाहिए टनेज को। That capability has to be recognized by you. And the next one is the crimping dies. अब crimping dies की जगह पे जहाँ पे आपका crimping dies are specially designed for certain hoses and the fittings. So make sure to verify the die set by using the crimper calibrations. If necessary, lubricate the die ball using a premium quality lithium based grease. Crimping machine को आपको मतलब you have to take care of that one crimping machines. That crimping machine का die set जो है this is a मतलब आपका जो crimping machine एक हार्ट है तो उसका भी एक हार्ट है crimping die set। तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा हर every time you have to calibrate your machine for proper usage. Next comes is the tapering and after crimper. After crimping जो है आपको टेपर आ जाता है कभी कभार, कोई चेक ही नहीं करता है, क्यों नहीं करता पता नहीं है, मगर इट्स अ बिग प्रॉब्लम। इफ यू गो टू द OEM सेक्शंस द टेपर वहां पे चेक करते हैं, मगर वर्कशॉप बेस पे हो या कोई और मीडियम स्केल पे हो, nobody checks the taper after crimping. Problems do occur because of the fitting material or problem with the machine that has to be taken care. Use authenticated source of fitting where ये जो फिटिंग बनाने वाला जो रहता है ना उसको पता होना चाहिए, दैट नॉलेज हैज टू बी टेकन केयर बाय द फिटिंग मैन्युफैक्चरर। जहाँ पे उसकी मशीन में क्रिम्पिंग मशीन में टेपरिंग आ रहा है पता नहीं चल रहा है, जब आप पूछेंगे डायरेक्टली तो फिटिंग बनाने वाले को तो बोलेगा यार कैसे हो सकता है। टेपरिंग is a big problem. Please do recognize this kind of a problems where taper is a must and it has to be taken care by the fitting manufacturer. वो annealing नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, directly he supplies to the hose assembler. Use authenticated fitting manufacturer के पास ही आप उसको फिटिंग को खरीदें। According to the sources, आप बोलेंगे कि 0.4 mm tapering is allowed, not more than that. Take care of it. 0.4 mm चलता है आसपास थोड़े सा, but उससे ज्यादा हो गया तो please ask the machine manufacturer and the fitting manufacturer to come and do have a look for the tapering problem. अगर tapering problem अगर ज्यादा हो गया तो OEMs और whatever the front आपका कस्टमर रहेगा वो रिजेक्ट कर देगा। ज्यादातर बहुत रिजेक्शंस आते हैं बिकॉज ऑफ टेपरिंग। टेक केयर ऑफ इट। एंड द नेक्स्ट वन इज द गैल्वेनाइजिंग। फिटिंग में अगर गैल्वेनाइजिंग रहेगा तो मोर एंड मोर गैल्वेनाइजिंग करने से क्या होता है, आपका जब फिटिंग को क्रिम करते हो तो ऑटोमेटिकली द बर विच कम्स एंड गोस इनटू योर राउंड शेप ऑफ जो हेड है, क्रिम्पिंग हेड है, उसके अंदर जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जब प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो जाता है तो सील किट कट हो जाता है, तो सील किट कट होने से आपका मशीन रुक जाएगा। देन इट्स अ बिग इश्यूज, मोर एंड मोर इश्यूज विल occur. Please reduce the galvanization. Not, I am not telling you to take it off totally, but I am telling you there is a standardization of galvanization. So that will be like 1 micron का ही ज्यादा galvanizing करवाया है। ज्यादा आपने करवा दिया तो वो पपड़ी निकल जाएगी और निकलने के बाद सीधा सीधा आपका हेड के अंदर जाएगा, हेड के अंदर जाएगा, सील किट खराब करेगा, कट करेगा। प्लीज रेड्यूस मोर एंड मोर, यानी कि उसको बोलिए कि जब फिटिंग बनाने वाला है उसको 1 माइक्रोन से ज्यादा गैल्वेनाइजिंग ना करे। नेक्स्ट, ओवर क्रिम्पिंग। यू हैव टू कंट्रोल द ओवर क्रिम्पिंग, इट कैन बी डन। और ओवर क्रिम्पिंग भी
आपको कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग ए पीएलसी बेस्ड क्रिम्पर। यू गॉट माय पॉइंट। पीएलसी बेस्ड क्रिम्पर आपने इस्तेमाल किया तो ऑटोमेटिकली ओवर क्रिम्पिंग करना भी कम हो जाएगा। टेक केयर ऑफ इट। एंड सर्विसिंग, दिस इज द मोस्ट मेजर पार्ट। आपने महंगी मशीन तो खरीद ली, सर्विसिंग जो है आप खुद करना चाहेंगे टाइम टू टाइम पे, तो आपका ये करना लाजमी नहीं है। टेक केयर ऑफ इट दैट इट हैज टू बी डन बाय द प्रोफेशनल्स ओनली and or under their गाइडेंस और सुपरविजन के हिसाब से यू हैव टू डू द सर्विसिंग ऑफ द मशीन्स। सर सर्विसिंग में कुछ है ही नहीं, डाई सेट चेंज करना है या फिर स्प्रिंग चेंज करना है, हम खुद करेंगे। कल का दिन कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि मशीन मैन्युफैक्चरर खराब है। दैट्स अ प्रॉब्लम। प्लीज डू द सर्विसिंग ऑफ द मशीन्स with only a professional servicing guy. Don't do it on your own. Now, specific machine should be used for a specific job. Why? This portion is very important. बहुत लोगों ने उसको क्या हिसाब में भी नहीं लेते। क्या करते हैं, नेट क्रिम्पिंग का जॉब है, you can do it on a local normal crimping machine. I think a lot of people have tried this already, and I don't think it should be done in this manner. It has to be like nut crimping का job है, you have to do it on a nut crimping machine. Insulator job है, it has to be done on an insulator crimping machine only. If it is like आपको कंक्रीट होस करना है, बड़ा सा कंक्रीट होस, आपने छोटा मशीन में 3 इंच का जो मशीन है उस मशीन में आपने क्रिम कर दिया तो क्या होगा? It will be a blast. Tomorrow you will not use the same machine again. The problem occurs there. Please use like a proper machine for a specific job. If the machine guy says you cannot do 2.5 inch R15 hose in a smaller machine, don't do it that one. Don't try to do it also. All the people I have seen, a lot of people have seen that they are doing their own job. वे चलते हैं, कराते हैं, चलेंगे, ट्राई करेंगे एक बार. That's the problem. Tomorrow the life of the machine will be reduced because of this kind of jobs what you are doing in your like workshops and the way. Please use like proper machine for a proper job. Steel pipes, a lot of things are there, more and more. Okay, and next one is the abusing of the machine. क्यों अब्यूज करते हैं? यानी कि जैसे आपने जो अभी जो बताया मैंने आपको, समझ रहे हैं कि वहां पे जहां पे कंक्रीट होस करना पड़ता है, लाओ यार कर देते हैं, मेरे मशीन कैपेबिलिटी है 500 टन बता दिया, बट दैट टनेज ऑफ द मशीन इज नॉट यूज्ड टू क्रिम द कंक्रीट होसेस. यू प्लीज आस्क द मशीन मैन्युफैक्चरर कि मेरे को करना है कंक्रीट होस, so which kind of like machine I have to use to do the concrete hose? If I want to do a insulator, can you use this machine? आप पूछिए. You please ask the machine manufacturer about all these things. I have to do some kind of a specific job. Don't you abuse the machine. मैं खुद कर देता हूँ, चलो. That's not the proper way of using a machine. Don't abuse the machine, please. Okay. Calibration of the machine should be done in a regular interval of time. That should be taken care by the hose assembly manufacturers, because अगर calibration सही तरीके से नहीं हुआ है machine पे, then volatility, taper crimping, वो ये सब कुछ आता रहेगा. Please calibrate the machine on a regular interval basis. And the basic maintenance chart, ये जो चीज है basic maintenance का, I have seen a lot of people, they don't see a basic maintenance chart there. It should be attached beside the machine or somewhere near to the machine where basic maintenance has been done regularly. Time to time interval पे basic maintenance हुआ है या नहीं हुआ है. You have to take care of it because basic maintenance से ही आपका machine का long life चलेगा. जहाँ पे 2 साल तक नहीं, 5 साल तक नहीं, 20 साल तक चला है. Basic maintenance chart बाजू में रखेंगे तो 20 साल के ऊपर चलेगा machine. नहीं तो भी अच्छा machine खराब होके बाजू में साइड में रखना पड़ता है. I've seen a lot of people, they kept their machine like, नहीं कुछ नहीं यार, क्या इसको क्या करने का है, मेंटेनेंस करना है ना, क्या करना है,
हवा मार देते हैं अंदर दबा के. डोंट यूज दैट काइंड ऑफ ए थिंग. हवा डायरेक्टली हेड के अंदर मारना या फिर कचरे को निकालने की जगह पे वो क्या करते हैं, हवा अंदर से ठोस ठोस के अंदर कचरा जाओ अंदर जाओ ढकेलना, ये सब तकलीफदायक है. मेंटेनेंस करने के लिए सही तरीके का मेंटेनेंस चार्ट लगा रहना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे भी उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा. दैट इज गुड एंड ए प्रॉपर एंड प्रोफेशनल वे ऑफ यूजिंग ए crimping machine. Okay, next one. Every time use the safety equipment. You should wear the goggles, ear protectors. इंडिया में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, but please take the safety measures for everything. Okay, this is the quality process. Now, the common crimping mistakes क्या है आपके हिसाब से? बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं. Let's start one by one. Okay, इंसर्शन नहीं होता है. कहाँ पे? पुशिंग मशीन में आपका इंसर्शन नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, दबा के इसको क्रिम्पिंग मशीन में आपने क्या किया, स्टॉपर लगा रहता है पीछे. दैट स्टॉपर को क्या करते हो, दबा के उसको मार दिया. दैट स्टॉपर क्या होता है, लेसर वो थोड़ा सा इंसर्ट नहीं हुआ है भाई, लो दबा के मारो और दबा के घुसेड़ दिया. तो आपका जो पीछे का जो ये रहता है ना, स्टॉपर रहता है ना, उसको मार पड़ता है. प्लीज डोंट पुश द फिटिंग और द होजेस फार एनफ into the crimping area. Please don't do that one. Proper way, insert it using a pushing machine and then push that one into the post crimping area. That will be a proper way. Next one. Okay, wrong fittings. और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फिटिंग लगा लिया, पुराना तराना उसको ही निकाला और उसको लगा के इधर फिटिंग लगा के, नया होस पाइप नहीं है, पुराना फिटिंग को ही लगा के सब कुछ करके, मतलब अब सही तरीके से ये दिस आर ऑल द कॉमन थिंग्स व्हिच वी कैन सी इन नॉर्मल होज एरिया, असेंबली एरिया में हम लोग देखते हैं. बहुत से यहाँ पे रिटेल पे जहाँ पे काम करते हैं, दे यूज द रॉन्ग फिटिंग, और फिटिंग जो भी है पुराना उसको इस्तेमाल करके चलाओ यार चलाओ, कुछ नहीं होता. दिस इज अ कॉमन मिस्टेक. एंड क्रिम्पिंग डाइस आल्सो द सेम वे. Always use a correct size die sets after verifying the final crimping diameter. Please don't use the wrong crimping die sets here. Next comes the under crimping. Assumptions नहीं चाहिए. वो हो चुका है भाई, शायद हो चुका है, निकाल दो, क्रिम्पिंग हो चुका है. आप देखते हो ना, थोड़ा सा भी क्रिम्पिंग हो जाता है, हाँ हाँ हो गया हो गया. इट्स नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दैट क्रिम्पिंग. अंडर क्रिम्पिंग हो जाता है. तो डोंट assume मत करें. Assumptions don't take it out. Make it in a proper way of crimping. Next one, mix and match in the crimping die sets. उसका एक अलग लगा दिया, इसका एक लगा के कर दिया. Always use the correct die segments of particular size. Don't mix match. Small size के लिए बड़ा, बड़ा size के लिए छोटा. This is not a proper way of doing crimping. Proper में सही तरीके से आप लोग मिक्स मैच ना करके क्रिम्पिंग डाई सेट जो रहेगा उसी को इस्तेमाल करें. And not lining up the hose correctly into the crimping diameter. It's a big story. आपने अगर लाइन सही तरीके से नहीं रखा, आगे पीछे करके उसको क्रिम कर दिया, तो what happens? The socket खराब हो जाता है. सॉकेट आधे बीधे क्रिम्प होते हैं. मतलब you have to line the hose correctly into the die. मतलब जो डाई के अंदर रखना है ना, आपको सही तरीके से रखें तो सही तरीके से प्रॉपरली क्रिम्प होगा. ऑपरेटर्स कुछ भी कर देते हैं, पता भी नहीं चलता है, सही तरीके से लाइनिंग नहीं करते, क्रिम्पिंग कर दिया. दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम. एंड यूजिंग ए रॉन्ग क्रिम्पर, लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा वो भी देखते नहीं है. सब लोग सीधा सीधा क्रिम्प मारो भाई. 1.5 इंच का क्रिम्पर रहता है, 2 इंच का लगाया, करो क्रिम्प. हाई जहाँ पे स्पाइरल क्रिम्प नहीं कर पाता है, 1.5 इंच का क्रिम्पर रहता है, उसको उठा के लेके आके इसमें लगाया और क्रिम्प करने की कोशिश. This is a bad way of using a crimper. That's mean abusing of a crimper. Take care of it.
Sorry, I told a long thing here. Next comes what is a good crimp and a bad crimp. Already I told you it's the same way. See, some of the examples are there. This is a good crimp. This is also a good crimp. See, crimping. Now this is called a over crimping, and this is called under crimping. हो गया भाई, हो गया. This is यही है under crimp करना. And mushroom flare crimping बोलते हैं इसको, जहाँ पे unevenly crimp हुआ है. And this is tail flare crimping. पीछे की तरफ देखिए, सही तरफ से क्रिम्प नहीं हुआ. ओके, इफ एन एनाटॉमी इज दिस, चेक कर लीजिए. आप अगर क्रिम्प करते हो तो सही तरीके से क्रिम्प हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए एक एनाटॉमी की ऑलरेडी मतलब एक डाइसेक्शन करके रखा है, देख लीजिए आप. इट शुड बी प्रॉपर वे ऑफ क्रिम्पिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं. नाउ हियर कम्स, आप क्रिम्प कहाँ से चेक करते हैं, कैसे आप मेजर करते हैं क्रिम्पिंग डायमीटर को, कौन से एंगल पे कहाँ पे रख के चेक करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ेगा. Proper way of using a caliper, okay, to you check the diameter of the crimping. It used to be like this, as shown in the picture. Okay, next, after the crimping, next comes the process of testing. I think all of you have seen these test benches. Some use manual, some internationally used मतलब टेस्टिंग मशीन्स यूज करते हैं. थोड़े से टेस्ट भी नहीं करते, उसी के तरीके से भेज देते हैं. We have to test that material. So how do you use a testing machine? And what is that one? Hydrostatic test benches make the efficient and the same safe final inspection of the hose line practically and fast. So अभी ये टेस्ट बेंच आखिर करता क्या है, टेस्टिंग करता है. तो होज जब रिपेयर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इट हैज टू बी टेस्टेड, एंड हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट shows that one where you use like 2 times. आप जो प्रेशर देते हैं वो 2 times को प्रेशर को विथस्टैंड करता है कि नहीं करता है. इन हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट दैट मेजर्स एग्जैक्ट प्रोपोर्शन कि ये जो होज हमने बनाया हुआ है, इज इट प्रॉपर एंड इज इट विथस्टैंडिंग द प्रेशर व्हाट वी हैव गिवन. 2 times आप टेस्ट करके आप कस्टमर को एक रिपोर्ट लिख कर दे दीजिए कि ये सही है. So then it will be a final inspected material, and it will be like practically आप सोचेंगे तो then all of the customers they need this kind of a tested material. Somebody don't use the testing also. In case of the leakage, the emitting fluid will flow back into the tank without any loss of testing fluid. अब हम लोग टेस्ट करने के बाद जो है उसको फ्लूइड को अंदर ही नहीं रखेंगे टेस्ट होज टेस्ट में, मतलब होज में, तो उसको निकाल के बाहर और जो फ्लूइड टैंक है उसके अंदर चला जाएगा, कभी भी लॉस नहीं होता. ड्यू टू द यूज ऑफ द स्पेशल वाटर एंड ऑयल इमल्शन, द असेंबली इज नॉट ओनली टेस्टेड बट आल्सो द सेम टाइम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोरोजन. जब आप इस्तेमाल करते हो, टेस्टिंग करते हो, तब उस टाइम पे उसमें केमिकल भी इस्तेमाल रहता है. लाइक वाटर बेस्ड रहता है, वाटर के साथ में हम लोग केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं. दैट केमिकल and water, they mix up and give a protected layer against the corrosion. That's a must. Already a lot of people use this kind of a thing, but some people they don't do that one. So we specially recommend that one to use this kind of test benches. Somebody wants to say something. Okay. Now, by connecting the optional test report and unit, all results may be recorded continuously. Using a test bench, what happens is you will take the test report out and give it to the customer. And accordingly, all that recorded, it will be kept in your laptops and in your hardware also.
So mostly what happens is everything will be recorded in a proper manner. हर एक होस्ट जो भी बाहर जाएगा it will be recorded. टेस्ट अगर होगा तो, अगर टेस्ट नहीं होता है तो रिपोर्ट भी जनरेट नहीं होता है. बट मोस्टली व्हाट हैपेंस इज सम पीपल डू द टेस्टिंग आल्सो, दे डोंट रिकॉर्ड इट. मैनुअल टेस्टिंग किया, ले लो भाई जाते रहो. But don't do it like that, because after testing that record should be there and kept in your company, so that every day somebody comes back, मेरा होस्ट फट गया, क्या प्रॉब्लम था, टेस्टेड करके दिया हुआ है, आप चेक कर लो. ये नहीं करते कभी भी, नहीं यार दोबारा बना के दे दो. दैट्स नॉट द वे. प्लीज आस्क द क्वेश्चन. हमने टेस्ट रिपोर्ट बना के दिया था आपको होस्ट के साथ, दैट टेस्ट रिपोर्ट आर यू हैविंग दैट वन? प्लीज कीप द रिकॉर्ड ऑफ दैट वन. लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दैट वन. टेस्टिंग कर देते हैं, वैसे ही वापस भेजते हैं. मोस्टली like a manual type of testing will be done, and this is a common testing machines. They do like 4-4 होज एक बार करते हैं, एक एक बार एक एक होज करते हैं, एक एक बार 16 होज टेस्टिंग भी होती है. 16 hoses at a time they can be tested, or 20 hoses can be tested at a time. There are a lot of machines there which can be done like 1 hose at a time, or 4 hoses at a time, or 16 hoses, or 20 hoses at a time, that can be tested accordingly. And mostly testing is done for testing a hose. That's the purpose. And testing process is a major point here in a hose assembly, because testing agar ho gaya, automatically the customer will be happy, you will also be happy, and everyone will be happy. Testing is a must unit here in the whole assembly process. So next comes now the cleaning part. It's also a major part here. अगर होज में कंटामिनेशन बच गया और डस्ट बच गया और फिर रस्ट चालू हो गया या कुछ और प्रॉब्लम्स है, दैट हैज टू बी क्लीन्ड आउट. अगर क्लीनिंग सही तरीके से नहीं होगा तो कंटामिनेशन बहुत बढ़ जाता है. सो कंटामिनेशन फ्री शुड बी डन. अगर होजेस 100% क्लीन नहीं हुआ है और 100% न्यूमेटिक्स के साथ और प्रोजेक्टाइल के साथ और केमिकल वॉशिंग के साथ क्लीन नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली द कंटामिनेशन गेट्स मोर एंड मोर. तो प्रॉब्लम होती है कस्टमर के साइड पे. कल का दिन दोबारा प्रॉब्लम लेके आएगा, होज सही नहीं है, प्रॉब्लम है, कंटामिनेशन है. और सामने जाके क्या होता है, अगर वो कंटामिनेशन बढ़ जाता है और जब वो पास होता है, ऑटोमेटिकली द वॉल्स और मशीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम चालू हो जाती है. इनको भी पता नहीं चलता, मगर सामने वाले को जो जब वो मशीन चलाते चलाते मशीन रुक जाती है, दैट कंटामिनेशन इज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन. कंटामिनेशन फ्री करके दीजिए ताकि वो कस्टमर भी खुश रहेगा और आप भी खुश रह सकोगे. Make sure you clean the hoses 100% before supplying the hose to a customer. Air will be trapped inside the hose assembly, aeration हो जाता है, cavity formation हो जाता है, or foaming which results in damage of the components of systems, overheating हो जाता है, burning हो जाता है, seals burn हो जाते हैं. यानी कि जब contamination आगे बढ़ेगा तब ये सब प्रॉब्लम चालू हो जाता है. ओवरहीटिंग होना, यानी कि मशीन आगे से ओवरहीट हो जाता है, बर्न हो जाता है, सील्स कट हो जाते हैं. कंटामिनेशन को रोकिएगा. प्लीज टेक केयर ऑफ दैट वन, दैट अगर आप जब भी क्लीन करके आप होज देंगे तो आगे वाला भी खुश रहेगा. सो फ्लशिंग शुड बी डन ऑफ ईच एंड एवरी होज असेंबली. वैक्यूम इज प्रेफरेबल मोर एंड मोर, यानी कि हर चीज को निकाल के बाहर निकाल दीजिए, कंटामिनेशन रुकना ना दीजिए वहां पे. थर्ड पोर्शन इज ऑफ करोजन. क्या होता है करोजन, क्या होता है? अब क्या होता है, अब आप जब वो अब केमिकल के साथ निकालो ना करोजन को, अब जब कटिंग करते हो उसका ब्लेड का और उसके अंदर जो रस्ट पोर्शन है वो सब कुछ जा जाके वहां पे करोजन चालू हो जाता है. सब कुछ निकाल के बाहर करना है. दिस आर ऑल द स्मॉल प्रॉब्लम्स, पता भी नहीं चलता है, माइक्रो प्रॉब्लम्स विल बी देयर. दैट नीड्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम गोइंग अहेड एंड अहेड, सामने जाने के बाद. जैसे नेक्स्ट वन इट कम्स इज स्लर्स, वार्निश, डेब्रिस, डिग्रेडेड फ्लूइड फ्रॉम कंडक्टर वॉल्स एंड सिस्टम, डेड स्पॉट्स, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ दिस कंटामिनेशंस. आप जब क्रिम्पिंग करने से पहले आप क्या करते हो, कटिंग करते हो.
कटिंग करने के टाइम पे वहां पे थोड़ा सा कंटेमिनेशन आता है या फिर डस्ट आता है, कटिंग का ऑटोमेटिकली जो रबर पार्टिकल्स वगैरह सब कुछ अंदर घुसता है, आप क्लीन नहीं करते। बाद में क्या करते हो, ऑयल डाल के उसको क्या करते हो, किसको ऑयल डालेंगे, फेरुल को ऑयल डाल के बाद में रबर के अंदर डाल के घुसेड़ दिया, अंदर डाला, यू पुश्ड इट इनसाइड मोर एंड मोर, देन आफ्टरवर्ड्स दैट वन आफ्टर क्रिम्पिंग कुछ किया नहीं, कुछ भी किया नहीं, वॉशिंग नहीं किया, क्लीनिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपने कस्टमर को भेज दिया, that goes inside to the next part, that's the machinery part, then it goes, more and more problems starts there. After cutting, one cleaning should be done before crimping, I mean to say, crimping होने के बाद और एक बार क्लीन कर दीजिए होस को। तो फ्लशिंग आफ्टर द मतलब होस असेंबली इफ इट इज ट्रस्टेड एंड मतलब टोटल फ्लश होने के बाद ट्रस्ट करने मतलब कस्टमर को ट्रस्ट आना चाहिए, आपको बताइए ना उनको प्रोसेस की वी डू दिस काइंड ऑफ वे flushing or chemical cleaning so that the customer will be happy and you will also be happy. These are the machines which is in the market. Lot of machines are there, not only this one. You can use the vacuum also. Chemical killing is a must one. So next process, there are the new technology which like hose assembly process को अच्छी तरीके से सामने बढ़ाने के लिए new technologies are there, advancement are there for hose assembly process which goes on, मतलब it has to go on again and again, मतलब next process भी बोल सकते हैं और next generation करके भी बता सकते हैं. Okay, these are all the something like controllers which is based on the which is on crimping machine, cutting machine, testing machine. All this one, they're all controlled by the controllers. The new technology. Okay. It assists you in the production mostly. जब आपको efficiency चाहिए and production आगे ज़्यादा बढ़ेगा, तो these are all PLC based controllers. The operators, they should know what is a software and how it has to be used, and it's like अभी आपका काम रुकता नहीं है, it will go run 24 hours, it will be running using these softwares and technology, that the operator will be in ease manner, he knows everything and he will be knowing everything how to use this kind of a software and how to take a deadline using this kind of a software. So quality control can be much more easier. See, I mean to say the quality control means आप अगर प्रॉब्लम हो जाता है, समझ लो कि आपको 10 mm का क्रिम करना है, एग्जैक्ट 10 mm का, देयर विल बी एन विंडो, लाइक आप उसको सेट करके दे सकते हो ऑपरेटर को, देख भाई इतना मेरा है 9.9 mm and 10.1 mm, that's my limitation, it has to be inside this kind of limit, the crimping has to be done. Take, give him that kind of a deadline and he will take it easily. और वो क्वालिटी कंट्रोल करना इसी से प्रॉब्लम मतलब सोल्यूशन यही है क्वालिटी कंट्रोल के लिए कि आप नए एडवांसमेंट को यूज कर सकते हैं. Software provides with detailed reports post production and after production also, before production also. So I mean to say कि आपको जो है रिपोर्ट्स पहले के और बाद के भी दे सकते हैं. Everything can be recorded, every crimping, every cutting, every testing, everything can be recorded. These kind of softwares are available with the branded machines. Check with that one. Ask everyone. A lot of people are providing this kind of a softwares with the machines. Production can be advanced using the touch screens because everyone is now like a Android based hai, sab kuch hai, and everybody knows what is a touch screen and how to use this kind of a touch screen machines. So take care of it. There are a lot of touch screen like पुराने तरीके के भी हैं, नए तरीके के भी हैं. New technology is much better. Visual symbols for ease of operations and every operations के लिए मतलब क्या visually आप देख सकते हो कौन सा बटन क्या दबाने से क्या होता है.
सब कुछ इजीली ऑपरेट किया जाता है। यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आपको ऑटोमेटिकली लाइक एक अनपढ़ आदमी भी जाके मशीन को ऑपरेट कर सकता है। इस तरीके का सिंबल्स डाल के देते हैं नए नए तरीके में। यानी कि आपको कोई बी इंजीनियर ही नहीं चाहिए कोई जाके ऑपरेट करने के लिए। जिस काइंड ऑफ मतलब एडवांसमेंट आ चुका है कि एवरीबडी knows the symbols and they can go and operate the machine easily, and they are all human friendly also, and यूएसबी कनेक्शंस भी लग जाते हैं जहां से आप अपना पूरा डाटा ट्रांसफर इजीली यूएसबी टू यूएसबी कनेक्ट करके निकाल सकते हो, और एनर्जी सेविंग भी हो जाता है, और साथ में प्रेशर एंड डाई के पोजीशन भी डिस्प्ले होते हैं। मतलब प्रेशर कितना चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन सा डाई चल रहा है, कौन सा डाई आपने डाला हुआ है, which die has to be selected, everything will be displayed on the monitors. And tool change wizards inform when to change the die set also. Then when you want some like a proper die set selection करने में भी ये इस्तेमाल होता है, जहाँ पे एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी है कि जहाँ पे आपको एक डायमीटर है तो उसके हिसाब से डाई सेट आप ये चूज करके इसमें डालो करके बोलता है। And has exact and logical navigation too. कहाँ से आपका प्रॉब्लम आई, अभी आप मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बोले तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रॉब्लम कहीं कोई वॉल में प्रॉब्लम आ गया, दैट वॉल प्रॉब्लम कैन बी शोन वुड बी शोन ऑन द मॉनिटर्स। मशीन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो पीएलसी बेस्ड अगर कंट्रोलर रहेगा देन इट विल शो यू वेयर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज एंड दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड इमीडिएटली। Connectivity through Ethernet and USB ports. Nowadays, all this has to be done. कनेक्टिविटी अगर नहीं है, यूएसबी पोर्ट से 1:1 हम लोगों ने मशीन का डाटा उठा के सीधा अपने लैपटॉप पे डाला। डाटा में आप मतलब कुछ नया प्रोग्राम बना के आप मशीन को दे सकते हो, वेयर इट इज इजीली कनेक्टिविटी इजी हो जाती है। इथरनेट भी और यूएसबी पोर्ट डाल के दोनों को भी इस्तेमाल कर सकते हो। थिंक अबाउट दैट वन की नेक्स्ट जनरेशन क्या हो सकता है। थिंक ऑफ इट, ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल कैन आल्सो बी डन वेयर ये दैट कम्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन की जगह पे आज हम लोग खुद करते हैं। ऑनलाइन क्वालिटी मॉनिटरिंग कैन बी डन टुडे इटसेल्फ, नॉट टुमारो, टुडे इटसेल्फ। अभी एडवांस इतना आ चुका है कि आप अपने घर पे बैठ के मशीन चल रही है और कौन से इस पे चल रही है यू कैन वॉच डायरेक्टली इन योर लैपटॉप्स। दैट्स द क्वालिटी कंट्रोलिंग हैज बीन डन एज ऑफ नाउ। एंड डाटा स्टोरेज तो होता ही है, all the data which is in the controller can be stored directly into your laptops or any desktops. No issues with that one. So this is a new technology and advancement for the hose assembly process. All this can be used for all the machines, like cutting, crimping, or साथ में testing. कोई भी machine हो, all this technology can be used. And nowadays, everything comes under like a hand पे आता है, हाथ में। आप अपने मोबाइल पे भी बैठ के आप अपना क्रिम्पिंग मशीन को हैंडल कर सकते हो। That kind of technology has come, already has come, and it takes a lot of money. Now the next one, the future scope, robots. Robots already have taken, मतलब has come into the picture. बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, मगर आजकल रोबोट्स इतना काम करते हैं जहां पे आदमी का इस्तेमाल नहीं होता है। मे बी नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आदमी की बजाय डायरेक्टली रोबोट उसमें होस डाला क्रिम्पिंग मशीन में और क्रिम्पिंग किया और निकाल के बाहर रख दिया। फ्रॉम स्टार्टिंग टू लाइक कटिंग से लेके स्काइविंग से लेके और इंसर्शन ऑफ द फेरोल से लेके क्रिम्पिंग करके बाद में टेस्टिंग करके बाहर निकालने तक all the process can be done through a robot. Hopefully next another 3 to 4 years में these robots can take lot of initiative लेके इन सभी डालने वाले हैं mostly because these robots are already is there in the market में आ चुके हैं where like a car बनाने वाले से सबको भी इस्तेमाल हो रहा है, तो why can't we use it
रैपिड प्रोडक्शन हो जाता है, आदमी का खर्चा बच जाता है, आदमी बैठे बैठे इनसे काम ले लेगा, 24 आवर्स रनिंग, नथिंग विल हैपन, चलेगा। बट मे बी आ सकता है। थैंक यू। नाउ द लास्ट क्वेश्चन आंसर्स प्लीज, एंड दिस इज माय फोन नंबर। Mr. Hello. Khan. Yes, sir. Hello. Can you hear me? Yes, I can. I've got a question about your calibration now. Yes. Of the crimping machine. So, do you carry on the calibration at the customer's side, that is the at the hose assembler's premises, or you take the machine for calibration at your end? See, that can be done both ways. Mostly what happens is all the service engineers are reliable and they go directly to the customer and do the service job. They do the calibration there itself on the machine. They don't do it Are you like they are you don't. issuing a calibration certificate like for all other gauges and all those things? The certificate is issued. Do you Not issue all, not all. Only, see, not all the gauges. Only the crimping machine can be issued that one. So Yes, for can be crimping machine, issued. are you issuing certificate, calibration certificate? Yes, it can be. Yes, it can be done. And are you actually doing it with a No, NABL connection? NABL traceability? या ट्रेसेबिलिटी तो नहीं है अभी तक, तो किसी ने पूछा नहीं है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, अभी तक किसी ने पूछा नहीं है, बट वी डू द कैलिब्रेशन एंड गिव इट टू देम डायरेक्टली। So in a new machine you must be calibrating it, but for after yes. What do you suggest after how many? See, that is not a record, and we don't do it like इतना टाइम के बाद इतना करना चाहिए, ये भी नहीं बोल सकते हम लोग। मगर एक चीज ये है कि when you see that kind of a tapering or overheating in the machine, at that time mostly the customer asks for the calibration of the machine or something like नहीं सर हमारा कुछ होना चाहिए था, इतना डायमीटर पे क्रिम्प नहीं कर रहा, दूसरा कुछ और क्रिम्पिंग दिखा रहा है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तब उस टाइम पे कैलिब्रेशन करके देना पड़ता है। When the new data sets you put it onto the machine, then also the calibration has to be done. That's a must. You were telling about that galvanizing and plating. Yeah. 1 micron से ऊपर actually end fitting में जो देते हैं, जो specified रहता है, the plating is recommended between, or even specification says that between 8 micron to 13 micron. So आप 1 micron में तो आपका white rust पड़ जाएगा बहुत जल्दी। बढ़ेगा, मगर आप जो बोल रहे हो 8 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन का हिसाब आप लगा रहे हो, तो दैट विल बी लाइक ह्यूज हो जाएगा, वो उसमें पापड़ी निकलना शुरू हो जाएगी ज्यादा। हम लोग क्या बचाना चाहते हैं, आपकी मशीन को बचाना चाहते हैं आप। Right now everyone does it. The global players, they do about 8 to 13 microns there, they do it. For threaded surfaces, probably on a lower side, 8 to 9 micron. But on say ferrule or socket and all, it's always 12 to 13 micron. Otherwise, but my sources say that it should be. No, but my sources say that it should be 1 to 1.5 microns only. It should not be above that kind of a thing. Because see what happens is, ज़्यादा अगर galvanize करोगे, जब crimping होगा, तो automatically the galvanizing, the upper portion of that ferrule breaks evenly. जल्दी break होता है. जब break होता है, तो automatically all the particles that comes and down, मतलब get down, are collected inside the surface. अंदर जो रहता है ना आपका हेड का जो सरफेस रहता है, उसके अंदर जाके कलेक्ट हो जाएगा। जैसे कलेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल गो इनसाइड, एंड सील का जो ब्रेक होना लाजमी हो जाएगा। फिर तकलीफ हुआ है अभी। Dada, Anup, you're on the line. No, yeah, Dada, there are some differences. Say we can avoid the debris of plating by inserting some sponge pieces between the mother jaw. That is along with the springs, we can insert some a sponge, so that all the debris can be collected on the sponge, and that sponge can be replaced on every TPM intervals.
are cleaned, removed or cleaned. That is the ये भी only बोल सकते हैं. solution for this collection of debris of plating. And see, Yes. 1 or 2 microns cannot withstand. We need 8 to 10 microns for all the platings. And plating की फापड़ी जैसे निकलता है, and it can be collected on that sponge itself. And many of the hose crimping manufacturers now provide the same within in between that. All grease machines, especially all those grease machines. Yes. Anyone? Any question from anyone? आप जो क्रिम्पिंग मशीन में आपका जो दो डाई के बीच में जो डाई होल्डर के बीच में जो स्प्रिंग लगा रहता है, एक्चुअली उस स्प्रिंग अगर इफ दे आर नॉट यूनिफॉर्मली हार्डन्ड और यूनिफॉर्मली प्लेस्ड, तो उसमें आपका बीच में जो डाई का जो मार्क आता है उसमें कभी कभी कुछ डाइस के बीच में गैप आ जाता है, अधिक गैप आ जाता है. Yes. So do you recommend to change the springs also Yes. frequently, and how frequently? If you Not recommend, how frequently. Not frequently. As you said, the problem is this one. Then you have to change the spring. आपने जो बताया प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा. It's not a frequent way. Somebody don't change the spring for a longer time, like 10 years हो जाते, कभी चेंज ही नहीं करते. थोड़े से आदमी हैं My experience says about 100,000. 1 lakh crimp के बाद spring normally on a production machine 1 lakh, or normally on a benchtop model it is after every 50,000 crimps you should check the springs. Yep. Okay. But I don't. But आपका जो अमरीश जी आपने बताया कि आपको चेंज करना है तो स्प्रिंग जरूर चेंज करना है, मगर एक दो स्प्रिंग नहीं, द होल स्प्रिंग सेट. डोंट चेंज वन स्प्रिंग. 16 के 16 स्प्रिंग चेंज करना है. 16 बोले पूरे का पूरा चेंज करना पड़ेगा आपको. ये चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा आपको. मंसूर साहब, दैट विल बी. जी जी. जस्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि दो टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में है. वन इज स्काइव टाइप एंड वन इज नो स्काइव टाइप. नो स्काइव टाइप, जी, नो स्काइव टाइप फिटिंग्स आर वेरी पॉपुलर दीज डेज बेसिकली. और स्काइव टाइप में एक जो क्रिम्पिंग का आफ्टर क्रिम्प का जो डायमीटर्स है वो दैट इज रेंजिंग अराउंड 5 to 6 mm. और अभी जो लेटेस्ट नो स्काइव की जितनी भी क्रिम्पिंग डिमेंशंस हैं वो आफ्टर क्रिम्प 10 से 12 mm तक जाता है. सो फॉर दिस टाइप ऑफ क्रिम्पिंग व्हाट यू रिकमेंड, अ सिंगल शॉट क्रिम्पिंग और अ पार्ट क्रिम्पिंग? पार्ट क्रिम्प करने से आपको तकलीफ होगी. वन सिंगल शॉट क्रिम्पिंग इज अ बेटर वन. बट व्हाट अबाउट द वॉल फॉर्मेशंस? द वॉल फॉर्मेशन तो बहुत बड़ा हो जाएगा आपका, क्योंकि आप 10 से 12 mm की जो बात कर रहे हो, तो आपका जो गैप आएगा, लाइन आएगी, तो वो बहुत ही खराब दिखेगी आपको. यानी कि कभी कभार तो बहुत ही पतली नजर आएगी आपको. my better thing is if you go for a skived fittings, that will be much better. अब मगर छोड़िए, अभी स्काइवुड बेटर है ही पहले से, मगर अनाउंस करे तो मार्केट में ज्यादा आज वही चल रहा है. तो मेरे हिसाब से जो है आपका वन सिंगल शॉट लेना बहुत लाजमी रहेगा, अच्छा रहेगा. ये वन शॉट लेने से ही तो वॉल फॉर्मेशन का चांसेस ज्यादा है कि वो बहुत ज्यादा वॉल फॉर्मेशन होएगा. और ब्रेकेज ऑफ फेरुल्स ये भी एक रीजन हो सकता है जो लोग फेस करते हैं और हम लोग कंप्लेंट्स लेते हैं मार्केट से. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर वन शॉट, और कि उसको ब्रेक कर सकते हो आप कि भाई 6 mm का क्रिम्पिंग करे या 5 mm का क्रिम्पिंग करे. दैट वे it is always to go for it is always to go for a single shot itself. Okay. This is not any thermoplastic hose or any PTFE hose to go for progressive crimping. Step crimping के लिए कोई plastic hose नहीं है. All hydraulic hoses has to be single crimp only, and एक ही shot में जाना चाहिए. As far as आप जो बोल रहे हैं कि crimp ferrule crack होता है, जी, वो crack it depends on your metallurgy. वो metallurgy के ऊपर depend है, क्योंकि because it has to be annealed for 850 degree to 950 degree तक
15 मिनट तक उसको गर्म करना ही है। Agreed. और उसके बाद उसको प्रॉपर एयर कूलिंग, एयर अनिलिंग चाहिए उसको, तो ही वो परफेक्टली वो करेक्ट उसका जो भी आपका 80 BHN 90 BHN वो कैरी करेगा। Agreed. Right. Yeah, But single shot is always recommended. Yeah, Dada. Yeah, I always, we always say that you should do it in one go. Number one, Anup is very correct in saying that it has to be annealed properly. Otherwise, the crimpings are, along the crimping dies, aapko cracks aayega. And these two are a must. And I very politely disagree to what Mr. Khan says that skived isme jana chahiye, because the technology is going toward non-skive. Everyone is trying to go yes. skive. So non-skive में कल को आपको skive वाला कोई लेगा नहीं शायद, कोई OEM नहीं लेगा because of contamination issue. So it has to be. This is my very polite submission that one should definitely go in for non-skive fittings and non-skive process, because that is the. It is again, Dada, it is again a very confusing subject as far as Indian climates are concerned, where extra ultra high pressure hoses are concerned. At some places we need to have interlock fittings, and always for braided hoses, as you rightly said, non-skive is a better thing to eliminate all the considering the environment, wastages and everything. Non-skive is always better for braided hoses and small spiral hoses. But as far as the bigger hoses like R15, like dash 20 and above, always interlock is preferred because of many issues. Because people don't crimp it. Again, in this today's subject, we had a slide confirming about the tonnages of machines, selection of machines. To crimp this non-skive fitting of dash 20, 24 and 32, you need machines up to 280 ton, 250 ton and above. Yeah. Mostly majority of the people doesn't have that. No, that is a must. Even if you go in for ultra high pressure hoses, crimping, you got to go in for a heavy tonnage machine. Otherwise, the radial crimp will not affect, and the elongation will take place in that particular area. We'll see a crimp, but that is not radial reduction. It will be a elongation on the ferrule. It is not effective. As it is happened a little bit, there is a material flow. So the material flow will happen on elongation process. It won't radially reduce the things. Which is the purpose? See where the world goes. Yeah. Thank you, Mr. Khan. Thank you. Yes. Thank you, Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Anubhai. Right. Thank you, Nitesh. Any other question? Giri, कोई question है क्या आपका? Yes, actually, good afternoon, sir. This is Giri from India side. I just want to ask one question. For crimping die, which material to be used for the die, crimping die? Sorry, come again? Crimping die. Have you know crimping die? Crimping die, I know. Actually, which material to be used for the crimping die? You mean to say what is the material of the crimping die set? Yeah. So that's a secret. Sorry, everybody doesn't want to tell the secrets of the crimping die sets. These crimping die sets are given by the manufacturers directly. They don't want to tell that this is the material of that one. Okay, thank you. Trade secret. Okay. It cannot be disclosed. Secret. Okay, thank you. Thank you, sir. So any other question? Deepak bhai, Ashish. Thank you, sir. कोई question है और किसी? Can we conclude? Yeah.
Yes, Yes. thank you all. Thank you all sir. for participating on this one wonderful. Nidhishji, back over to you. Thank you, Mansoor bhai. Very informative and very engaging session basically. And I think all the participants must have like got something out of this program. And again, as usual, I would like to have your feedback. So, what kind of subjects you would like to have in this knowledge sharing forum, so that on every second and fourth Saturday we are going to conduct this program, knowledge sharing series. So you can have your feedback also, so that accordingly we can take the programs and we can take the webinars. So once again, thank you very much, Mansoor bhai and all the participants. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. See you. Bye-bye. And the recording of this program will be available on YouTube channel. We will share the link also. Maybe in next couple of days, by Monday, we will be sharing the link of YouTube this thing recording. Okay, sir. Thank you. Thank you. Okay, sir. Thank you. Then again on second Saturday we'll be meeting.